हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिस मैनुअल LPP क्वेश्चन नंबर 3 का थ्योरी। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इसको पढ़ने से पहले एक शॉर्ट मैं रिव्यू करना चाहूँगा। तो चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस मैनुअल का थियरी। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का लिमिटेशन क्या है। पहला लिमिटेशन है कि ये लीनियर ही होना चाहिए, नॉट लीनियर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, नॉन लीनियरिटी, जॉइंट इंटरेक्शन एंड जॉइंट परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शनल इसके लिए एक प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इक्वेशन कंप्लीटली नोन होना चाहिए एंड नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। आंसर, इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर एस फॉलोज। इसमें हमने क्या बोला था कि लीनियर होना चाहिए, नॉट लीनियर। अब डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द एवरी कांस्टेंट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है एवरी कांस्टेंट फंक्शन मस्ट बी लीनियर। This requires that the measure of effectiveness and the resources uses must be proportional to the level of each activity conducted individually. However, programming problems which are non-linear arise quite frequently. It occasionally possible to reformulate a non-linear programming problem into a linear programming format so that the simplest method can be used. This is, however, the fortunate exception rather than rule. ये तो exception है ना कि rule है। नंबर सेकेंड, इट मे नॉट बी, सेकेंड पॉइंट हमने क्या होता है, नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, जो नॉन लीनियरिटी में हो, जॉइंट इंटरसेक्शन है और जॉइंट परफॉर्मेंस है। अब इसको डीपली पढ़ते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग इन विच नॉन लीनियरिटी अराइज बिकॉज ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन बिटवीन some of the activity regarding total measure of effectiveness or total uses of some resources. Hence, linear programming problem requires that the total measure of effectiveness and the total resources uses resulting from the joint performance of the activity must equal the respective sums of these quantities resulting from each activity being performed individually. In some situation, it may not be true. For example, consider a situation whereby a byproduct is produced with the scrap material from the primary product. The material would still have to be procured if only one of the two products were produced, मतलब एक या दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। However, the total material requirement if both products are produced is less than a sum of requirement in each were produced individually. So it may not be possible to handle such situation with linear programming problem से। थर्ड नंबर है, थर्ड में बोला था कि फ्रैक्शन के बारे में बात होगा। तो अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फ्रैक्शनल वैल्यूज आर परमिटेड, वो परमिट करता है
for the decision variable, तो एज अ डिसीजन वेरिएबल के लिए. However, many decision problems require that the solution for decision variable should be obtained in known fractional values. Rounding off the values obtained by the linear programming techniques may not result into an optimal solution in such a cases. Number 4 point क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इक्वेशन कंप्लीटली नोन होना चाहिए, नॉट चेंज द पीरियड क्वालिटी, नॉट चेंज द. तो हमने क्या बोला है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या तो कांस्टेंट है, इक्वेशन कंप्लीटली नोन होना चाहिए, नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी. In linear programming problem, coefficients in the objectives function and the constant equation must be completely known. They should not be changed during the period of study. That is, they should be known constants. In practical situation, it may not be possible to state all coefficients in the objective function and constant with certainty. Furthermore, these coefficients may actually be random variables, each with an underlying probability distribution for the values. Such problem cannot be solved using linear programming. Thank you for watching.